everyone. So, I am in my reading era. No, not an era, but reading something. Like I love books. If you can tell, let me just show you one thing. Let me for a second. It's not really surprising, but okay. Ugh. Do not look at the mess, but okay, look at this. Look at this. And there is more. Oh, close. And there are more books I have. These are just that I have, yeah. Basically, I have these, and I don't know why I have ramen here, but okay. I have these. I have this. I have these. I have this. I have here. These are very padhai. I have this one fat ass book. It's related to BTS, and yeah, I do have more books. Should I wear glasses? I'll look like on some thing. I don't know. Okay, so I have a lot of books. Probably over 60 books, 60, 65. And I know that is very less. I mean, according to a reader, it is very common. Like, you need to have a lot of books. But I don't read. I don't read. Haha, surprise. Yes. Like, because of all this study stress, and then studies are over right now, like temporarily, but I still have the stress because I don't know, I have the stress. So I am in kind of a slump जिससे मैं 6 महीने से बाहर नहीं आ पा रही हूँ. So I haven't read anything. So I am trying, like I started reading a book and then I stopped, and then again I started reading a book. I'm 50% I've read a book, like literal 50%, and I stopped it. I read last week and I haven't read it. And then this book I just started. I am reading Good Girl Bad Blood, which is a second part of A Good Girl's Guide to Murder series. And yeah, I have read the first book, of course, 2 years ago, but then I didn't get time to read the second book. So now, since the series is coming, A Good Girl's Guide to Murder, which I've already seen it, so I mean, it was kind of fresh in my brain memory, because I forget things. I'm a fucking goldfish. But okay, my memory is very commendable, you can say. But yeah, so I forgot stuff, but then when I saw the series, I kind of remembered little everything, and then when I saw it, I was like, okay, yeah, this happened, and now I want to read the same book. So I am currently on like the third or fourth chapter, and yeah, I slept. I mean, I didn't sleep whilst reading it. I was reading it and then I stopped, and then I was scrolling reels, and I slept. And then I woke up and then I was like, okay, let's vlog this. Let's yap, which I haven't done since like maybe 2 months. I don't know. So this is nothing. I actually want to do like a book, like haul kind of, whatever books I have, whatever books I've read, whatever books I want to read. So I'm going to be doing that in future. When future, we don't know, but yes, future, yes. So yeah, I do look good in these. Well, by the way, 2 महीने में इनको 4 साल हो जाएगा. I bought these in 2020 because online classes थे जो मैं अटेंड तो करती नहीं थी, but then I was like,
कन्विंस्ड मैं बधो स्वभाव, मेरी आँखें ख़राब हो जाएगी, बट देन फिर मैं 3-3 बजे तक जो रील्स देखती हूँ उससे आँखें ख़राब आई मीन या नहीं होती है। एंड ऑनलाइन क्लासेस जो मैं सोते सोते अटेंड करती हूँ उनसे ज़रूर आँखें ख़राब हो जाती है। सो या I convinced my mother to get me these, yeah. And I have these. I mean, I have been using these क्योंकि एक बार इससे पहले मेरे चश्मे चोरी हो गए थे। बैड लक है मेरा, मतलब भाई कुछ ना कुछ होता ही रहता है मेरे साथ ज़िंदगी में। I'm like I try to live at peace, देखा peace बोला ही और हो गया। So I try, अभी मैं इसका स्टैंड ढूंढ रही हूँ यार। I try to live in peace and नहीं हो पाता है मेरे से because my life is like why will speechless, why will we let you live शांति से, like no, you need some lessons every time। मतलब भगवान मुझे पैसे दो, lessons नहीं चाहिए, मतलब like उसके साथ साथ पैसे भी मिले तो like you know you could be like okay I can handle it, now I don't have anything, I just have some lessons that nobody gives a fuck about, even me। like मैं वापस वही चीज़ें कर देती हूँ। so lessons learn करके कुछ होता नहीं है, right? मतलब मुझे अभी क्या मैं बोलूँ, मतलब मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए, but everything is just so depressing। it feels like मुझे खुद कंसर्न होने लगता है, अरे जाना कंसर्न होने लगता है कि मेरी ज़िंदगी किस राह पे जा रही है, like where am I heading, like क्या हो रहा है मेरे साथ, like अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, like but like अच्छा तो कुछ हो नहीं रहा है, but like ऐसा बुरा भी नहीं हो रहा है, तो like क्या हो रहा है, क्या रहा है। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे because लाइफ गोज़ ऑन। और हमारी प्यारी किंडू बेबी, इसका नाम मैंने बाय द वे ज्ञानी रखा है, ज्ञानी, बिकॉज आई डोंट नो, जस्ट ज्ञानी गाइज, ज्ञानी हु गाइज, बट अगेन आई डोंट नो गाइज, ज्ञानी, दिस इज ज्ञानी, हमारी प्यारी ज्ञानी। इतना लंबा इंट्रोडक्शन क्यों दिया मैंने इसको पता नहीं, but okay, I like to give names to every inanimate object in my life which is like prominent कि हाँ okay, मैंने इस चश्मे का भी कुछ ना कुछ नाम रखा ही होगा जब मैंने इसको लिए होगा। इससे पहले वाला जो था उसका भी रखा था, भले ही वो थोड़ा सा क्रिंजी था, अच्छा ही हुआ वो घूम गया, क्योंकि अगर मतलब like a 12-year-old bought it, so like 12 or 13-year-old got it, so not judging my choices, but yes, it was ugly। अगर वो अभी मेरे साथ होता तो मुझे वो पहनने पड़ते, मतलब मैं उनको कहीं फेंक देती कबाड़े में, बट लाइक मैं वो नहीं पहनती because those were ugly as shit and I don't know why, मुझे एकदम ऐसा लगता था कि oh my god, मैं चश्मा पहन के जाऊँगी तो लोग मतलब मैं अलग ही रूप से, वो सीरियल में नहीं होता वैसे ऐसे छोटी सी बिंदी लगा देते हैं, लाइक अलग ही दिखने लगता है। तो आई थॉट मैं चश्मा लगा के एवरीवन विल लाइक oh my god, एंड देन एक बार मैं गई ऐसे शर्मा के, लाइक एवरीवन वाज जस्ट लाइक सो कैजुअल अबाउट इट, एंड मुझे अंदर से सब बुरा लग रहा था कि अरे यार थोड़ा तो ऐसा कुछ बोलो मेरे चश्मे के बारे में, इतना चश्मे के बारे में क्यों बड़बड़ कर रहे हो, माय गॉड, आई शुड शट अप। एंड जी मैं पढ़ने के लिए बोला था एंड आई एम फकिंग नॉट डूइंग दैट,
मेरा डिस्ट्रैक्शन लेवल इज़ वेरी ऑन पॉइंट। मतलब सबसे सही चीज़ जो हो रही है ना वो है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ हर चीज़ से। Let's motherfucking read the book, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। I don't know why